Okay, so today I am discussing motion under central forces. Central forces क्या है आपको मालूम है ना? Yes, sir. Depends only on distance. And, Okay, depends only on distance and and it always it is always applied along the line of joining the source and the rest mass or charge. okay, so the force between any two particles, it acts along the straight line joining the two Yes, yes. particles, and the magnitude is a function of the distance. Okay. So a central force is a force that acts along the straight line connecting two particles and is a function of the distance f of r. Okay, so what I want to do today is this. First of all, I want to reduce the if there are two particles, let's suppose आपके पास दो पार्टिकल है, because to experience a force you need two particles. ठीक है, only when there are two particles or more than two particles involved, forces can be experienced. Just a singular particle will not experience a force. Singular particle will experience a force in the presence of an external force field, but the external force field create कौन करेगा? A secondary particle, right? So there are a minimum requirement of two particles. So it's a two body problem that can be reduced further to a one body problem. फिर उसको हम एनालाइज करेंगे उस मोशन को, फिर उसका जो है लैग्रांजियन यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करेंगे, और फिर उसकी एनर्जी एनालिसिस से हम उसके मोशन की अलग अलग ऑर्बिट कौन कौन से पॉसिबल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ठीक है, एंड देन वी विल ऑब्टेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑर्बिट. So these are some of the topics that I'm going to discuss now. Okay, so let me first draw a sort of a coordinate system where I can denote the positions of these particles. So let's suppose that I have an XYZ coordinate system. X, Y, Z coordinate system, and I have two masses, m1 and m2. Okay, now if there is a force acting between these two particles, then the force will be acting along this particular line. However, if I want to study the dynamics of the system, then I will have to study the dynamics with respect to some external coordinate system, right? So for example, m1 may have some kind of a position vector r1, okay, m2 may have some position vector r2, okay, and their center of mass could be r. Okay, so let's suppose this is r1, this is r2, this is center of mass. Okay, this is center of mass. Okay, so in this kind of a system, if two particles are experiencing some kind of a force, then the force could be directed along this line, no doubt. Okay, but if I want to study the dynamics of the system, then I'll have to look at an external coordinate system. So the force could be directed along this particular line, but if I want to study the dynamics, I'll have to study it with respect to XYZ coordinate frame of reference. And because there are two masses, m1 and m2, how many degrees of freedom are there in the system?
2, 6. 6. It's in 3D now. Yes, sir. Two masses Six, are free six. to move in 3D space. So it is 6 degrees of freedom. So therefore, the coordinates are given by R1, that is nothing but 3 coordinates, x1, y1 and z1, and R2, that is nothing but x2, y2 and z2. 6 degrees of freedom and 6 generalized coordinates. So these are the 6 generalized coordinates. Okay, now in effect what we have is, this is known as a two-body problem. Okay, so what we are going to do is, note, we are going to reduce a two-body problem. Two-body problem means there are two particles having their two independent coordinates, and therefore we'll end up getting how many differential equations? 6. 6 degrees of freedom है, मतलब 6 generalized coordinates है, and with respect to 6 generalized coordinates we will have 6 Lagrange equations, so there are going to be 6 equations of motion. But then that's a very difficult situation ना, 6 generalized coordinates or 6 equations of motion होंगी, तो it becomes very complicated because you'll have to solve all of those equations simultaneously. So the only way to work around it is to reduce the number of independent equations. So for that what we have to do is, we have to note, we are going to reduce this two body problem, ठीक है, two body problem to a one body problem. One body problem मतलब, instead of having equations in terms of R1 and R2, which is a two body problem, we will reduce it to R. This is R, this vector is R, which is a one body problem. ठीक है, अगर R1 और R2 के जगह पे मैं कोई नया कोऑर्डिनेट, नया पोजीशन वेक्टर R निकालता हूँ, R basically gives us the vector drawn from particle 2 to particle 1, then I'll basically have reduced the system from a two body problem to a one body problem. ठीक है, and this is a very important problem in sort of analyzing planetary motion, because you simplify the system to the analysis of the system from a complicated system to a very simple one. One body problems are easy to study. But before we do that, let us look at various quantities. So सबसे पहला तो है center of mass. Okay, because if I want to reduce R1, I want to find out the relationships that exist between R1, that exists between R1, R2, R and capital R. Okay, so उसके लिए I need to find out first the center of mass. Center of mass. So center of mass R is nothing but m1 R1 plus m2 R2 divided by m1 plus m2. Okay, this is the center of mass first of all, and थोड़ा नीचे चलते हैं, and the various other relationships that exist is R, which is the vector drawn from particle 2 to particle 1, is nothing but R1 minus R2. Okay, R is nothing but R1 minus R2. यहाँ पे I can also define other vectors. So for example, I can say that अगर मैं इस वेक्टर को R मान रहा हूँ, if this is R vector, if this is R vector, so I can say that this vector is, let's suppose, from the center of mass frame of reference, this is R1 dash and this is R2 dash. Okay, so R1 dash and R2 dash are defined with respect to center of mass. Okay, this is a CM. Okay, so this is basically vector drawn from 2 to 1.
This is the vector which is drawn from 2 to 1. Okay, body 2 to body 1. All right, and with respect to center of mass, I can define r1 dash is equal to r1 minus r, and r2 dash is equal to r2 minus r, where r1 and r2, the r1 dash and r2 dash are defined in the center of mass frame of reference. Okay, so have you understood these quantities that I am defining? R1 is the position vector of mass m1 from the external coordinate frame of reference. R2 is the position vector of mass m2 from the external coordinate frame of reference. R is the position vector of the center of mass from the external coordinate frame of reference. No, sorry, capital R. Small r is the vector from the point body m2 to point body m1. R1 dash is the center of is the vector of body 1 in the center of mass frame of reference, and R2 dash is the vector of body 2 in the center of mass frame of reference. ठीक है, ये सारे quantities clear है? Is it clear? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let us do some calculations and find out the relationships that exist between various such quantities. सबसे पहले, in the center of mass frame of reference, in the center of mass frame of reference, in the center of mass frame of reference, because the frame of reference lies in the center of mass frame of reference, ठीक है, तो I can say that m1 r1 dash plus m2 r2 dash is equal to 0 in the center of mass frame of reference. Okay, so because m1 divided by m1 plus m2 is simply equal to 0, because center of mass frame of reference में आपका center of mass पे ही origin lie करेगा उस frame of reference का. So therefore this can simply be noted down as r2 dash is equal to minus m1 upon m2 r1 dash. Okay, so this is one relationship. So यहाँ पे let me keep a note of this. So this is point number 1. Okay, this is point number 2a, this is point number 2b, this is point number 3. All right, so now okay, now using equation 1, we can write that r is equal to r1 minus r2 you can write that r1 is equal to r1 minus r2, and I can substitute point number 3 here. No, first let me substitute point number 2a and 2b. Using 2a and 2b, I can write here r1 is equal to r1 dash plus r, r1 dash plus r minus r2 is equal to r2 dash plus r. Okay, so this is nothing but r1 dash plus r minus r2 dash minus r. So ये r यहाँ पे हो गया cancel, and this is equal to r1 dash minus r2 dash. Now यहाँ पे let us use equation number 3. Using equation number 3, I simply get
r1 dash minus r2 dash is equal to minus m1 upon m2 r1 dash. Okay, so this is simply equal to 1 plus m1 upon m2 r1 dash. Okay, so this is equal to m1 plus m2 divided by m2 r1 dash. Okay, so from here what do I obtain? From here I obtain that r1 dash is equal to m2 upon m1 plus m2 r1. yes, मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो टू बॉडी प्रॉब्लम था इट वाज डिफाइंड इन अ एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, टू बॉडी प्रॉब्लम वाज डिफाइंड इन एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. I want to make it a one body problem, but when I want to make it a one body problem, I need to go to the center of mass frame of reference. So because I want to go to the center of mass frame of reference, therefore center of mass के perspective से R1 dash और R2 dash को मैं find out करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, so I need to find out the relationships for these. So therefore R1 dash is related to R1. R1 क्या है? It is the vector drawn from second body to first body. That's it. R1 is a vector which is drawn from the second body to first body. Sorry, R. So R1 dash is equal to M2 upon M1 plus M2 R1. ठीक है, so let's suppose this is point number 4. This is point number 4A. Similarly, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ that, यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ that this is equal to R1 dash is equal to minus M2 upon M1 R2 dash, है ना. तो ठीक है, फिर इसको मैं अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, let's suppose from here if I substitute from here, we can also obtain R is equal to R1 dash minus R2 dash. यहाँ पे if I substitute this expression, okay, if I substitute this expression, R1 dash is equal to minus M2 by M1 R2 dash. Then it simply becomes, this is equal to minus M2 by M1 minus M2 by M1 R2 dash minus R2 dash. Okay, so this becomes minus M2 by M1 plus 1 R2 dash, so which is nothing but M1 plus M2 divided by M1 R2 dash, or R2 dash is equal to minus M1 by M1 plus M2 R. ओके, ये आपका हो गया सेकेंड एक्सप्रेशन. या सर इक्वेशन नंबर 4 इज करेक्ट. कौन सा? और ए, हाँ, आई थिंक इन ऑफ R1 वेक्टर इट शुड बी R वेक्टर. हाँ, R vector, sorry, R vector, and this is R vector. Yes. So why am I doing this is because once you know the system, that means if you know that there are two masses present, then you automatically know what is R. Okay, you automatically know what is R. So now if you know what is R, then from there you can obtain R1 dash and R2 dash. Are you understanding? Because अगर हम दो पार्टिकल्स के डायनेमिक्स को स्टडी करना चाहते हैं, हमें जो लैग्रांजियन लिखना पड़ेगा वो हम लैग्रांजियन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पार्टिकल्स. तो इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स हम लिखेंगे तो R1 डैश और R2 डैश वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन R हमें पहले से मालूम है. ठीक है, और R1 डैश और R2 डैश निकल आएगा तो R1 और R2 भी निकल आएगा विथ रेस्पेक्ट टू सम एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, सो बेसिकली
So these are the transformation equations that you can use to go back. Okay. Excuse me, sir. Yeah. Sir, is the Lagrangian invariant under inertial frame transformation? See, first of all, the Lagrangian is not necessarily unique. Okay, okay. It is Because not. of the potential energy term. Yeah, it is not unique. All right, but therefore there is no unique Lagrangian like that. But the equation of motion should be the equation of motion that you obtain from the Lagrangian, that is unique for a particular system. The nature of the solution. Okay, so if we are writing the Lagrangian in the center of mass frame and suppose we are writing it in some other inertial frame that we have taken as the origin above, so that will not be necessarily the same, right? Uh, See, the quantities involved will be different. So for example, if I write it in terms of the center of mass frame of reference, the Lagrangian will be written in terms of r dot dash square and r dot dash r12. But if I write it in the this form of reference, the external coordinate frame of reference, there I will write it in terms of r1 dot square and r2 dot square. Okay, so the nature of kinetic energy and potential energy is same, but the quantities will be different, of course. And I am यहाँ पे जो मैंने लिखा है येलो में, these are the transformation equations between those quantities. So I am obtaining the transformation equations initial. I'll come up with the Lagrangian. मैं दिखा भी दूंगा दोनों Lagrangian एक्सटर्नल में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसा है, लेकिन उससे पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशंस लिख रहा हूँ. तो उससे क्या होगा कि इफ़ यू सॉल्व इट इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, that solution is nothing but r, and from r you can obtain r1 dash and r2 dash, and from r1 dash and r2 dash you can obtain r1 and r2. So basically जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वन बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसको जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम्हें लिखने का मन है तुम लिख सकते हो यूजिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. ओके सर. ठीक है. नाउ इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट. सो इफ यू यूज द रिड्यूस मास यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन. सो फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस मास, you already know what a reduced mass is. So reduced mass is simply given by 1 upon mu is equal to 1 upon m1 plus 1 upon m2. So this is 1 upon mu is m1 m2, so m1 plus m2. Okay, so mu is equal to m1 m2 upon m1 plus m2. so यहाँ पे इसको फिर से रिड्यूस मास के टर्म्स में लिख सकते हैं. r1 डैश इज इक्वल टू m, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m2 by m1 plus m2 कैन बी रिटन एज mu अपॉन m1 r. ये एक एक्सप्रेशन है. और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं r2 डैश इज इक्वल टू माइनस mu upon m2 r. So this is also another expression that you can use in terms of the reduced mass. ये एक expression हो गया और ये एक expression हो गया. यहाँ पे ये एक expression हो गया, ये एक expression हो गया. Okay. Now I want to see these are the transformation equations between various quantities defined with respect to various frames of reference. Now what I want to do is I want to write down what is the Lagrangian involved. Okay, Lagrangian क्या है वो मुझे लिखने का मन है, पर Lagrangian में लिखूंगा किसके पर्सपेक्टिव से, Lagrangian में लिखूंगा r1 डैश के पर्सपेक्टिव से या r2 डैश के पर्सपेक्टिव से. ठीक है. So therefore I have obtained 4A and 4B. So let's write down 4A and 4B. So 4A क्या था, r1 dash r1 dash is equal to mu upon m1 r and r2 dash is equal to minus mu upon m2 r. These were the transformation equations. So if I take a time derivative,
if I take a time derivative, then R1 dash dot is nothing but mu upon M1 R dot है ना, I think this is 1, and R2 dash dot is nothing but minus mu upon M2 R dot. Now let us write down the Lagrangian for this system. ठीक है, so I am going to write down the Lagrangian for this particular system where there are two bodies M1 and M2 that have 6 degrees of freedom, R1 and R2. So if I have two bodies M1 and M2 that have 6 degrees of freedom, R1 and R2, and they are connected by some kind of a force, and the force, the central forces, the central force potential is, let's suppose V. Okay, V is basically R1 minus R2. Okay, that is connected to some kind of a force. Let's suppose this one, they are connected to each other. This force and this force potentials are connected to each other. In that case, the Lagrangian is nothing but, the Lagrangian is given by L is equal to half M1 R1 dot square plus half M2 R2 dot square minus V R1 minus R2. That's it. Quite simple, right? The first term is the kinetic energy of the first particle, the second term is the kinetic energy of the second particle, and the third term is the potential energy that exists in the configuration of M1 and M2. ठीक है, ये आपका हो गया the kinetic energy of the first particle, ये आपका हो गया kinetic energy of the second particle, and this is nothing but the potential energy of the configuration. Or because central forces are dependent only on the distances between R1 and R2, so this is nothing but R1 minus R2. Now R1 minus R2 क्या है यहाँ पे? R1 minus R2 is nothing but R. Okay, so R1 minus R2 is nothing but R. R1 minus R2 is nothing but R. So V R1 minus R2 is basically can be written as VR. It simply means that the potential energy depends on the distance, instantaneous distance between both these two masses. ठीक है? So R1 can be written as R1 dash plus R, है ना, and R2 can be written as R2 dash plus R. ये इसको इससे क्या मिलेगा, and R1 can be written as R1 dash plus R, and R2 can be written as R2 dash plus R. So R1 dot is nothing but R1 dash dot plus R dot, and R2 dot is equal to R2 dash dot समझते हो ना, टाइम डेरिवेटिव, एंड R dot. तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ M1 R1 dot dash square plus half M1 R dot square plus half M2 R2 dash dot square. वैसे यहाँ पे वेक्टर्स लिख सकते हैं, वेक्टर्स के टर्म्स पे, ठीक है, प्लस हाफ M2 R capital R dot square minus V of R. Are you following ना? You are following this? Yes, sir. All right. So this can therefore be written as half, पहले तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इससे मैं लिख सकता हूँ हाफ M1 plus M2 capital R dot square. What is this? This is the kinetic energy of the center of mass. This is the center of mass. So this is the whole term is the kinetic energy center of mass. Plus this is nothing but half M1 R1 dash dot square plus half M2 R2 dash dot square minus V of R. Okay, don't get confused. I just want to simplify the Lagrangian. Now, सर yeah, सर यहाँ पे जो R1 डैश लिखा है वहाँ पे टर्म तो वॉल स्क्वायर में आना चाहिए ना सर? क्या?
होल स्क्वायर में टर्म नहीं आएगा R1 डैश की जगह, हम जब R2 डैश प्लस R का होल स्क्वायर नहीं आएगा वहाँ पे? तो फिर इसको खोलेंगे तो 2 टाइम्स वाला टर्म भी आना चाहिए था। हाँ हाँ, वेट वेट वेट, ओके ओके, होल स्क्वायर वाला टर्म भी आ जाएगा ना यहाँ पे, एक सेकेंड। R1 डॉट इज इक्वल टू R1 डैश प्लस R। ओके, लेट मी चेक। तो अच्छा, होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा, फिर प्लस 2 R1 डैश R। ओके ठीक है, आई थिंक यू आर राइट, सो लेट मी राइट दोज टर्म्स ऑल्सो। होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ R1 डैश R, ट्वाइस ट्वाइस कैंसिल, M आ जाएगा M1 R1 डैश कैपिटल R। ठीक है, ये आ गया आपका एक। दूसरा टर्म आएगा M2 R2 डैश R, यहाँ पे डॉट। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस M1 R1 डैश डॉट प्लस M2 R2 डैश डॉट ब्रैकेट में R। अब ठीक है ना, अब ठीक है ना? यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बता सकते हो, ये क्वांटिटी कितना होगा? 0 होगा ना ये तो? यस सर। कैसे 0 सेंटर ऑफ होगा? मास फ्रेम से सेंटर ऑफ मास की। वेलोसिटी इज 0। यस सर। सो यहाँ पे जो मैंने लिखा था सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये लिखा था ना, ये इसका मैं अगर टाइम डिराइवेटिव लूँगा d/dt ऑफ M1 R1 डैश प्लस M2 R2 डैश इज इक्वल टू 0, देन दिस इज नथिंग बट M1 R1 डैश डॉट प्लस M2 R2 डैश डॉट इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? सो दिस इज, लेट्स सपोज पॉइंट नंबर 3B, है ना? सो यूजिंग 3B दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 यूजिंग 3B। ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हुज वेलोसिटी इज 0। ठीक है ना? सो देयरफॉर दिस इज नथिंग बट हाफ M1 प्लस M2 R डॉट स्क्वायर प्लस हाफ M1 R1 डैश डॉट स्क्वायर प्लस हाफ M2 R2 डैश डॉट स्क्वायर माइनस V ऑफ R। ओके, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ओके, सो लेट्स से दिस इज द लैग्रैंजियन। नाउ दिस इज अ लैग्रैंजियन ऑफ अ टू बॉडी प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज अ लैग्रैंजियन ऑफ अ टू बॉडी प्रॉब्लम। Two-body problem in terms of the velocity of the first particle in the center of mass frame of reference, the velocity of the second particle in the center of mass frame of reference, and the velocity of the center of mass, है ना? R dot क्या है? R dot is nothing but the velocity of center of mass, velocity of center of mass, है ना? अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ हाफ M1 R1 dot dash square plus half M2 R2 dot dash square is simply equal to, let's use the relationships in 4a and 4b। ठीक है, 4a and 4b में जो रिलेशनशिप था उसको यूज़ करते हैं। साइड में मैं लिख देता हूँ क्या था रिलेशनशिप्स, 4a and 4b। 4a में था आपका R1 था ना, R1, ये R1 था। ओके, R1 डैश डॉट बेसिकली 4 1 और 4b का डिराइवेटिव। ठीक है,
So r1 dash dot is equal to r1 dash dot, ये दोनों relationships, ठीक है. r1 dash dot is equal to mu upon m1 r dot, mu upon m1 r dot, and r2 dash dot is equal to minus mu upon m2 r dot. Okay, ठीक है. All right, let's use these quantities here. So this is nothing but half m1 r1 dash dot is equal to mu upon m1 square, ये बन जाता है r dot square प्लस हाफ m2 ये माइनस mu upon m2 square r dot square. So this is equal to half let me check. म्यू बाहर लेके आता हूँ, ठीक है. सो ये बन गया आपका म्यू आर डॉट स्क्वायर. वेक्टर को हटा देता हूँ बिकॉज इट्स अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर. सो दिस प्लस और एक सेकेंड, इसमें तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, माइनस कैसे आ गया. नहीं सॉरी, m1 है यहाँ पे, सॉरी आई मेड ए मिस्टेक. म्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या है, अपॉन m1 r डॉट स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस हाफ mu square upon m2 r dot square. So this is simply equal to half mu square 1 by m1 minus 1 by m2 r dot square. So this is nothing but equal to half mu square. तो mu क्या होता है, mu is nothing but this is mu is nothing but m1 m2 upon m1 plus m2, ठीक है. So m1 m2 upon m1 प्लस m2 का स्क्वायर. सर स्क्वायर है तो माइनस नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा. हाँ प्लस ही रहेगा, सॉरी. सो दिस एंड यहाँ पे आ गया आपका m1 m2 m1 प्लस m2. So this is r1 dot square. So this is just equal to, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बेसिकली, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. So this is half mu r dot square. So this term is simply equal to this, and this term is nothing but this particular term here. Okay, so let's rewrite the Lagrangian. Let's rewrite the Lagrangian. Now if I rewrite the Lagrangian, it simply becomes L is equal to half m1 plus m2 r capital R dot square plus half mu small r dot square plus v of small r. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, माइनस पे यहाँ तक क्लियर है. यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? Okay, now please notice this Lagrangian. This is a Lagrangian only of the quantity r. अब ये we are not concerned with capital dot r because r dot is a constant. क्यों? Because this is an isolated system. Isolated systems का center of mass जो है वो constant velocity के साथ move करता है over a period of time. अगर दो बॉडी है और वो दोनों बॉडीज आइसोलेटेड सिस्टम है तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है इट विल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी. जो भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा. r डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, है कि नहीं? यस और नो? यस सर. That means the center of mass of a two body system travels with constant velocity. This is something that we know. Note
center of mass of a two body isolated system travels with constant velocity. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that this entire term is a constant. Yes or no? Entire term is a constant, yes? Yes, sir. जब Lagrangians में constants होते तो उससे क्या फर्क पड़ता है इक्वेशन ऑफ मोशन पे? कुछ भी नहीं पता। Nothing. कोई फर्क नहीं पड़ता है. Therefore, let's suppose in the Lagrangian, in the center of mass frame of reference, the Lagrangian can be rewritten as L is equal to half mu r dot square minus v of r. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर है तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं, और क्योंकि पोटेंशियल जो है सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस, तो मैं यहाँ पे वेक्टर का क्वांटिटी हटा देता हूँ. सो नाउ I have reduced six simultaneous equations. ठीक है, I have reduced 6 simultaneous equations to 3 simultaneous equations because I have reduced the Lagrangian from R1, R2 to R. ठीक है, we have reduced the L in terms of, स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था? इन टर्म्स ऑफ R1 R2 लिखा था ना, ये R1 और R2 के टर्म्स पे लिखा था. ठीक है, सो फाइनली हमें R के टर्म्स पे मिला. सो वी हैव रिड्यूस्ड द Lagrangian इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 टू अ Lagrangian इन टर्म्स ऑफ R. सो दिस इज द reduction of a two body problem to a one body. So R क्या हो गया? R is associated with just one quantity, therefore it's not as one body problem. अब जो भी एनालिसिस है मैं वो एनालिसिस इस Lagrangian के साथ कर सकता हूँ, and whatever the solution I get, solution क्या होगा? RT होगा. इससे जो है मैं बाकी सारा ऑब्टेन कर सकता हूँ. इससे मैं आई कैन ऑब्टेन व्हाट इज R1 डैश, आई कैन ऑब्टेन व्हाट इज R2 डैश, आई कैन ऑब्टेन व्हाट इज R1 एंड व्हाट इज R2. ठीक है, मैं अगर इस Lagrangian को सॉल्व करूँगा तो मेरा जो सोल्यूशन है वहाँ से आई कैन ऑब्टेन R1 डैश, I can obtain R2 dash, I can obtain R1 and I can obtain R2. Are you understanding? Using the transformation equations written before. Excuse me, sir. Yes. So I have two questions. First, there were 6 degrees of freedom, and and we were saying there were 6 because there were 2 particles and we were working in 3 dimensions. Yes. So now we have shifted it to 3 degrees of freedom. So basically there should be 3 implicit holonomic constraints which we have used before. So are those basically the relations of x and x coordinates of the 2 particles, y coordinates of 2 particles and z coordinates of 2 particles? Actually what we have done is we have not used constraints here. What we have used is we have shifted the coordinate system. Okay, sir, what I'm saying is because we earlier had 6 degrees of freedom and now we were able to reduce it to 3. There must have been some constraints that were in the equations which we were not familiar with, but they just worked implicitly within the equations. No. Okay, let me explain. We did not use a constraint equation. What we did is we changed the coordinate frame of reference. Are you understanding? Like when you talk about constraints, you do not change the coordinate frame of reference. You talk about those constraints in the same coordinate frame of reference. We have changed the coordinate frame of reference and we have reduced the problem to something in terms of R. Now R is not
r is not the coordinate of any particle. Yes, sir. R is just the instantaneous distance between the particles. Yes, sir. Are you understanding? R is not a coordinate of some particle m. It is just the instantaneous distance of the particles. So the system is still 6 degrees of freedom because there are two independent particles, but we have transformed the Lagrangian in terms of some other quantity, which is R, that does not represent the instantaneous position of any particle present in the system, but rather it only represents the instantaneous distance between two particles. And from there I obtain R1 and Yes, sir. Yes. R2. So That- therefore that- that's not the same thing as saying that I used constraints to reduce the degrees of freedom. Are you understanding? Yes, sir. But let's say, so for this system, we can say that m1 x1 dot plus m2 x2 dot is equal to a constant. This will be valid, right? Because it is an Yes. isolated system. Yes. And similarly for y and z. Yes. So is this just a coincidence that there were three equations of this kind and 6 degrees of freedom got reduced into 3? This is what I wanted to ask. No. Wait. Okay. No. Here we have not basically. How do I say this? R is just R is not the position of any particle. Yes, R sir. जो है R is equal to R1 minus R2. Yes, sir. The Distance between them. instantaneous distance between them with respect to some external coordinate system. Okay, with respect to an external coordinate system. So R here does not uniquely specify the position of both the particles in space until and unless you define a coordinate system. Are you understanding? Yes, sir. R does not uniquely define the position of both the particles in space. It only tells us the relative position of both the particles with respect to each other. Yes, sir. So हम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको बोलते हैं जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेस में विथ रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम यूनिकली डिफाइन करे, है ना. आर जो है इट डज नॉट यूनिकली डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस विथ रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम. It only tells us the relative distance between two particles. ठीक है ना. वहाँ से Yes, हम sir. पोजीशंस की यूनिक पोजीशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ वी क्रिएट एन एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट सिस्टम जहाँ पे हमें मालूम है कि कैपिटल आर क्या है. Those things are our choice. But with Okay, sir. respect to an external coordinate system, the degrees of freedom are still 6. But what we have done is we have reduced the Lagrangian with respect to another quantity, and this quantity, which is R, is just the relative position of the particles, not the क्या बोलते हैं, not the individual position of two particles, but the relative position between two particles. Yes, sir. Is it making sense? Because Yes, हमने sir, यहाँ yes. पे कोई कंस्ट्रेन तो नहीं यूज़ किया, इनके बीच का कोई कंस्ट्रेन नहीं है, और फोर्स को तुम कंस्ट्रेन नहीं मान सकते हो. फोर्स जो है पोटेंशियल फील्ड का कोई रिलेशनशिप अगर रहेगा वो उसको तुम कंस्ट्रेन नहीं मान सकते हो. तो यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रेन नहीं यूज़ किया है कि लेट्स सपोज तुम्हारे पास दो मासेस है और दे आर कनेक्टेड बाय अ रॉड. तो यहाँ पे तो कंस्ट्रेन हो जाएगा. ये जो आर है, आर इज इक्वल टू एल, समथिंग लाइक दैट, ये Yes, sir. कंस्ट्रेन आ जाएगा. वैसा कोई कंस्ट्रेन यहाँ पे नहीं है. हमने सिर्फ इक्वेशंस को मॉडिफाई किया विथ रेस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल आर, एंड वी विल सॉल्व इट विथ रेस्पेक्ट टू आर. एंड व्हेन वी सॉल्व इट विथ रेस्पेक्ट टू आर, वहाँ से हम बाकी सारा ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. सो वंस वी मेक अ चॉइस ऑफ द एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट सिस्टम. Yes, sir. Okay, so it is not the same as saying it there's a constraint involved. There is no constraint involved. It's just that we have tricked the situation by transforming the Lagrangian, which was originally in terms of two independent variables, to a Lagrangian which is the relative difference between those variables.
Yes, sir. है ना, the relative difference between those variables, not the individual variables, but the relative difference between those variables. I hope Okay. that makes sense, na? Yes, sir. Yes, sir. I got the point. Sir, another question that I wanted to ask was this Lagrangian is basically the kinetic minus potential energy. So, this term corresponds to translational motion, the first term, translational, the rate at which the distance between them changes. So, the rate at which they are moving away or towards each other. Yes. So, as we did in Newtonian mechanics, shouldn't there be a kinetic energy term for angular momentum as well here, so that we can form the effective potential after that? Actually, there is. I am sorry. Now I have written the vector. Basically, this represents the instantaneous distance. So this is nothing but r dot r cap plus r theta dot theta cap. Yeah, this is what it is. Okay, sir. Okay, got it. Okay, Got so it. basically this represents the velocity term, right? So r dot this represents the velocity. Okay, so r dot square this represents the velocity square, which is nothing but vr square plus v theta square. Theta. So this is Yes, the sir. magnitude of velocity. So this is r dot square plus r square theta dot square. Okay, I've just Yes. written in terms of r as just to symbolize that it represents velocity of the instantaneous distances between these two particles, but that can be broken down into the radial components and the angular velocity terms, which I'll do. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Okay. Now, so this is the Lagrangian, and we want to look at a solution of the Lagrangian. From the Lagrangian, we can obtain the equations of motion, etc., etc. So, एक बार करके देखते हैं, ठीक है? What sort of equations we get? Basically, we'll get the equations which are we are familiar with, but थोड़ा सा एक बार करके देखते हैं. So now, the Lagrangian is L is equal to half mu r vector dot square minus v of r. Okay, so this is the Lagrangian, and in polar coordinates I can write this as you have said, I can write this simply as half of mu r dot square plus r square theta dot square minus v of r. Okay, this I can write, I can substitute this here, because this simply means the velocity term. This is just the velocity magnitude. Velocity magnitude can be written in terms of the radial and the angular components. Okay, so basically what I can do is I can write it in terms of, so there are two therefore variables here, r and theta, r being the radial distance between any two particles. So दो particle अगर let's suppose तुम्हारे पास है, एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है, ठीक है? So ये है आपका m1 और ये है आपका m2. तो पहले let's suppose ये थे यहाँ पे, ठीक है? थोड़ी देर बाद ये हो गए आपके, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया और ये पार्टिकल यहाँ पे चला गया. तो थोड़ी देर बाद जो है ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया. तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? दो चीज़ें हो रही है. एक तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है r वो चेंज हो रहा है, ठीक है? और इनके बीच की जो स्ट्रेट लाइन है, इट इज़ अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ अ रोटेशन ऑल्सो. ओके, सो दीज टू थिंग्स आर हैपनिंग. One, the radial distance r is changing. Okay, the instantaneous distance between, जैसे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है. तो डिस्टेंस इज चेंजिंग, और the line connecting both these two, they are also undergoing some kind of a rotation, which is given by theta, that idea is given by theta. So let us do it with respect to r once and with respect to theta once. Okay, if I write down the Lagrange equation with respect to r and theta, so this becomes, so this is d by dt of del L upon del r dot minus del L upon del r is equal to 0, and this is d by dt of del L upon del theta dot minus del L upon del theta is equal to 0. Okay, so let's suppose we write it with respect to r. So with respect to r, so here
डेल एल अपॉन डेल आर कितना होगा, डेल एल अपॉन डेल आर आपको कितना होगा, ये होगा म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, है ना, एंड डेल एल अपॉन डेल आर डॉट कितना होगा, ये होगा म्यू आर डॉट, ठीक है, एंड डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल आर डॉट कितना होगा, ये होगा म्यू आर डबल डॉट, ठीक है. So therefore this equation becomes d by dt of del L upon del R mu r double dot minus mu r theta dot square minus plus del v upon del r is equal to 0. Now usually del v upon del r क्या होता है, this is the force, whatever the force expression, yes, माइनस एफ और प्लस माइनस एफ सर. हाँ माइनस एफ, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो मैंने सिर्फ एफ लिख दिया है डायरेक्टली, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, सो म्यू आर डबल डॉट माइनस म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया आपका म्यू आर डबल डॉट माइनस म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर. सो देयरफॉर यू गेट द इक्वेशन f of r is equal to mu r double dot minus r theta dot square. This is the equation of motion that will give you an idea about the radial distance r at any given point in time. Let's suppose this is point number, ये मैं बाद में यूज़ करूँगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बोल दूँ इसको, 5 बोल देता हूँ. दिस इज इक्वेशन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल कम बैक टू दिस, ठीक है. सेकेंड यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है आपका हियर डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 0, डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट, है ना, म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट. अब कोई मुझे बता सकता है कि डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट है क्या बेसिकली, p theta angular moment. P theta. this is nothing but the p theta term. Yes, sir. This is nothing but the p theta term, that is the momentum associated with this thing, angular displacement. So this is written by small l also या capital also. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नाउ d बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू 0. इट सिंपली मीन्स दैट d बाई डी टी ऑफ p थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और डी पी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0. What does this mean? What does this mean? P theta is constant. Yes, very good. It simply means that p theta or L is a constant. So this simply implies the conservation of angular momentum. Conservation of angular momentum. This is clear? Yes, sir. तो इसको हम लिख देते हैं L इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है. ये एक एक्सप्रेशन हो गया. एक और एक्सप्रेशन हमें चाहिए होगा जो मैं यूज़ करूँगा, और थीटा डॉट इज इक्वल टू L अपॉन म्यू आर स्क्वायर. लेट अस कीप अ नोट ऑफ दीज एक्सप्रेशंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना चाहिए. दिस इज लेट्स सपोज 5/6a and this is 6b. यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Okay, I'll come back these two equations, and from these two equations I'll obtain the differential equation of motion.
But before I do obtain the differential equation of motion, I want to do some analysis of the different kinds of planets and the energies that are possible. ठीक है, सबसे दो conclusions. One is we have a force equation associated with the radial motion. Theta dot यहाँ पे constant है. Constant नहीं, sorry. Theta dot is just L upon mu r square. And P theta is a constant, which is the angular momentum. Okay. तो we have showed. हाँ, तो यहाँ से जो है मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आपको बता दिया. यहाँ पे दो एनालिसिस जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इसमें आ जाएगा, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, और कुछ हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया. जनरल प्रॉपर्टीज सेंट्रल फोर्सेस इज दैट एक तो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, यहाँ से प्रूव हो जाता है. टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ a system experiencing central forces is conserved, and because angular momentum is conserved, even though I have not proved it here, we can prove it separately. Do you want me to prove it that the direction is also constant? We'll have to apply vectors there. Yeah, you already know that. Huh? Yes, sir, we will do that. You can do that? Okay. So if you can show that basically the motion lies on the plane. The motion lies on a plane. Motion is restricted to a plane. So basically what happens is that whatever motion these two particles are experiencing, m1, m2, ठीक है, जो भी इनके बीच का मोशन है, पहले यहाँ पे था फिर बाद में यहाँ पहुँच गया. ठीक है, जो भी इनके बीच का मोशन है ये प्लेन में ही होता है. ठीक है, ये पहले m1 यहाँ पे था, m2 यहाँ पे था, इनके बीच का जो भी वॉट एवर ट्रेजेक्टरीज दैट दे आर अंडर गोइंग, लेट्स सपोज दिस इज अंडर गोइंग, this is undergoing. So whatever motion that they are undergoing is happening on a particular plane itself. So these are two important properties of central forces that we can arrive here. अगर आपको देखना है कि मोशन का जो डायरेक्शन कांस्टेंट है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली पी आर निकाल लो. पी आर इज जस्ट द लीनियर मोमेंटम एंड फ्रॉम देयर यू कैन ऑब्टेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, आप पी आर निकाल लो लैग्रांजियन से. पी आर, तो पी आर के लिए आप क्या कर सकते हो, पी एक्स निकाल सकते हो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट. पी वाई निकाल सकते हो डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट. पी जेड निकाल सकते हो डेल एल अपॉन डेल जेड डॉट. ठीक है, यहाँ पे जो एल दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ दैट, और उसके बाद यू फाइंड आउट व्हाट इज एल. सो वेक्टर, एल वेक्टर इज नथिंग बट आर क्रॉस पी. ओके, वेयर पी इज नथिंग बट पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप. ठीक है, यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ है. फॉर एग्जाम्पल द एरियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट. डू यू वांट मी टू शो दोज थिंग्स आल्सो, केपलर सेकंड लॉ एंड ऑल दीज थिंग्स. ये आपने किया हुआ है ये पहले चीज़. केपलर सेकंड लॉ एरियल वेलोसिटी पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो बता दो. Yes, sir. एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट भी एक और प्रॉपर्टी है. एरियल वेलोसिटी the conservation of angular momentum applies the constancy of aerial velocity. Aerial velocity swept out by the particles is a constant. Okay, और आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हो. लेट्स सपोज, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिर्फ एक पार्टिकल्स के मोशन को आप स्टडी करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू लेट्स सपोज द सेंटर ऑफ मास समथिंग लाइक दैट, पार्टिकल ऐसे मूव कर रही है एंड पार्टिकल का जो आर का डिस्प्लेसमेंट आप स्टडी करते हो. ठीक है, यू बेसिकली स्टडी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर, देन द आर वेरीज as the particles are undergoing some kind of a change, so it goes from r
to r plus dr and it undergoes some kind of a d theta. ओके जो r जो है यहाँ पे उसकी वेरिएशन को स्टडी कर रहे हो आप किसी कोऑर्डिनेट में एंड थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा अंडरगोज इट अंडरगोज डी थीटा एंड इट अंडरगोज चेंज इन r. सो ऐसे सिचुएशन में जो आपका एरिया होगा, एरिया स्वेप्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट ये जो डिस्टेंस है आर्क, व्हाट इज दिस इज़ नथिंग बट r d theta, so half of r d theta into r, yes, area of a triangle. So this is nothing but half r square d theta, and aerial velocity is nothing but dA upon dt, which is half r square d theta upon dt, so which is nothing but half r square theta dot. ओके, सो थीटा डॉट के जगह पे हम ये यूज़ कर सकते हैं पॉइंट नंबर 6b, पॉइंट नंबर 6b, ओके, एल अपॉन म्यू आर स्क्वायर. सो दिस इज़ नथिंग बट हाफ आर स्क्वायर एल अपॉन म्यू आर स्क्वायर. सो दिस इज़ नथिंग बट एल अपॉन 2 म्यू. अब म्यू सिस्टम के लिए कांस्टेंट है, एल तुम्हारा कांस्टेंट है, तो दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू कांस्टेंट. द एरियल वेलोसिटी ऑफ this thing is a constant that can be, this is nothing but the Kepler's second law. आपने पढ़ा भी होगा प्लानिटरी मोशन में, Kepler's second law. ठीक है? Yes, sir. All right, let us move on to the next topic, which is classification of orbits. Okay, effective potential and classification of orbits. I'll come back to the equations of motion after I discuss this. Effective potential effective potential and classification of orbits. Okay, now so आपका जो है यहाँ पे Lagrangian को देखते हैं. Lagrangian is this. Okay, now gravitational forces, electrostatic forces, the different kinds of central forces are conservative forces. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पहला टर्म है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये आपका काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. दूसरा टर्म जो है आपका नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू राइट डाउन द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो Lagrangian is nothing but half m r dot square plus half m r square theta dot square minus v of r. ठीक है, so this is equal to t minus v, that is your t is equal to half m r dot square plus half m r square theta dot square, and v is equal to just v is nothing but vr, whatever it is. So total energy will be equal to, total energy is, let's suppose capital E is equal to t plus v, so that is nothing but half m r dot square plus half m r square theta dot square प्लस वी आर. ओके, अब यहाँ पे जो है थीटा डॉट इज नथिंग बट, अगेन आई विल कम बैक टू दिस इक्वेशन ओवर एंड ओवर अगेन, 6b एल अपॉन म्यू आर स्क्वायर. ठीक है, एल अपॉन म्यू आर स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे. सो दिस इज हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर एल अपॉन म्यू, क्या था ये, आर स्क्वायर था ना, एल अपॉन म्यू आर स्क्वायर, एल अपॉन म्यू आर स्क्वायर square plus VR. So this becomes, total energy becomes half m r dot square plus अच्छा यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूँ शायद, नहीं म्यू था ये, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती की, ये म्यू है ना, एम है, ये म्यू है, रिड्यूस मास है यहाँ पे, ये म्यू है नॉट एम. सो यहाँ पे होगा आपका एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर प्लस वी आर, है ना. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम.
total energy of the system is this is the total energy of the system, जहाँ पे फर्स्ट टर्म represents the radial kinetic energy. ये सिर्फ आपका रेडियल डिस्टेंस आर कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ उसके ऊपर डिपेंड करता है. दिस रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको डिपेंड करता है आर के ऊपर. अब ये जो टर्म है, अब दिस हैज समथिंग टू डू विद द डिपेंड्स ऑन एंगुलर मोमेंटम. सो डिपेंड्स ऑन रोटेशन ऑफ द सिस्टम, रोटेशन ऑफ सिस्टम. ये जो सिस्टम यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम रोटेट भी तो कर रहा है ना. ये एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो द टू पार्टिकल सिस्टम इज रोटेटिंग इन दिस प्लेन. तो दिस सेकेंड टर्म हैज टू डू विद द रोटेशन ऑफ द सिस्टम. आर यू फॉलोइंग गाइज? Yes, sir. The first term represents the kinetic energy due to the rate of change of the radial distance. The third term represents the potential energy due to the instantaneous radial distance. The second term is basically the rotation that is happening with respect to the particle. ठीक है, पहले एक पार्टिकल यहाँ पे था, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे था, बाद में ये पार्टिकल यहाँ पे आया, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आया, तो ये सिस्टम जो है रोटेट हो गया है. सिस्टम जो है एक तरीके से रोटेट हो गया है. तो अगर हम रोटेशन को इग्नोर करें, if we ignore the rotation for the time being in our analysis and we just look at the radial motion, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक ऑब्जर्वर है यहाँ सेंटर ऑफ मास पे, वो भी रोटेट कर रहा है. अगर इस सिस्टम के साथ वो ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन द सिस्टम विल नॉट बी रोटेटिंग एनी मोर विथ रेस्पेक्ट टू द रोटेटिंग ऑब्जर्वर. यस, अगर सिस्टम जिस रेट पे रोटेट कर रहा है उसी रेट पे जो है ऑब्जर्वर भी रोटेट कर रहा है, इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन दिस इक्वेशन विल गिव अस nothing but just the radial distance between the point mass particles, because the system will not be rotating anymore because observer is rotating now. Hello? Yeah, yes, sir. Just a moment. Where is the audio? एक सेकेंड, why is now audio not coming? just give me a moment. I think, are you guys able to hear my audio? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I was actually recording the video also, but somehow the audio there got disconnected for some reason. Let me check. क्या हो गया यहाँ पे? Filters, settings.
Okay, it's working. Just 2 minutes. Okay, so what I was saying is that I can now reduce this Lagrangian further by only analyzing this particular term and sort of absorbing the second two terms together to effectively talk about a system that is where the observer is also rotating. Okay, so for that what I can do is I can say that I can define a new effective potential. So this new effective potential, let's suppose U effective R is simply equal to L square upon 2 mu R square plus V of R. So if I add these two terms, then the total energy simply becomes, half of mu R dot square plus U effective of R. So this energy is basically the energy of the motion of a particle of mass mu, okay, under some kind of a central force U effective, where the observer is also a rotating frame of reference. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ. The above represents or describes the motion of a particle of mass mu under a central force U effective, let's suppose, because ये भी R के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पे भी ये R है, यहाँ पे भी ये R है, तो ये R के ऊपर डिपेंडेंट है, where the observer O is at a rotating frame of reference. Where this second term is simply just the result of some kind of an inertial force, where the additional potential energy is leads to an additional force, just leads to an inertial force in a sense. So for example, अगर मैं जो है ये पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है L स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर का जो है माइनस डी बाई डी आर करता हूँ, then this is nothing but the force associated with this particular quantity, let's suppose Fc. तो क्योंकि L आपका जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 L स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर क्यूब हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट L स्क्वायर अपॉन म्यू आर क्यूब. ठीक है, L स्क्वायर अपॉन म्यू आर क्यूब. नाउ व्हाट इज L? L इज यहाँ पे L क्या था, L वाज म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट, म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट. तो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट होल स्क्वायर, so this is nothing but mu r cube. So this is simply equal to mu square r to the power 4 theta dot square divided by mu r cube. So this is equal to, यहाँ पे mu cancel हो बचा mu r theta dot square. Okay, so this particular term is the potential energy corresponding to this amount of force. That is all, nothing else. So whatever is the force that is creating a rotation,
द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट इज सिंपली दिस। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस को सिंपल बनना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड द रेडियल डिस्टेंस ओनली, देन आई एम गोइंग टू राइट द टोटल एनर्जी. So finally the total energy E is equal to half mu r dot square plus U effective R, where U effective is simply equal to L square by 2 mu m r square, L square upon 2 mu r square plus VR plus VR. यहाँ तक जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आर यू फॉलोइंग, या किसी पॉइंट पे कोई डाउट है? You're following, okay. So let us take an example then. ठीक है, let us take an example. यहाँ तक जो है, we are not discussing a force. All of this discussion that we have done, we have only done for central forces, but I have not yet specified what is the nature of the force. So all of these discussions of finding out the Lagrangian and finding out the equations of motion, these are unique for all central forces in a sense. So this equation for angular momentum, this is unique for all central forces, because right now this energy term, this is unique for all central forces, because I have not yet specified what is the nature of the force. So first time I am going to specify an force here. Let's suppose gravitational force. And then let us look at the nature of the motions with respect to the energy. So gravitational force में क्या होता है? Fr is simply equal to minus some constant upon r square. This is a gravitational force. All right. And the potential associated with the gravitational force Vr is simply equal to minus k by r. Okay. So let us analyze the gravitational force. So U effective therefore becomes L square upon 2 mu r square minus k by r, okay, and energy is equal to half mu r dot square plus U effective, okay, for gravitational force. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे अभी, इसमें लेट अस लुक एट दीज एक्सप्रेशंस. तो ये जो दोनों एनर्जी के टर्म है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है आपका पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रहा है, वो आर के ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज एन 1 by r डिपेंडेंस, दिस इज 1 by r स्क्वायर डिपेंडेंस, है ना. इफ आई प्लॉट अगर मैं करूँगा तो किस तरह का इक्वेशन आएगा? लेट्स सपोज मैं अगर y इज इक्वल टू 1 by x को प्लॉट करता हूँ, y इज इक्वल टू 1 by x को प्लॉट करता हूँ, लेट्स सपोज इसको प्लॉट करके देखते हैं. तो इस तरह का ग्राफ आएगा ना, दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको? यस सर. इंसर्ट ऑन पेज. ठीक है, ये जो है आपका ये ग्राफ हो गया. ठीक है, और अगर मैं नो सॉरी मैं गलती कर दिया, ये माइनस 1 by x है. सॉरी नो जेड, ये है माइनस 1 by x माइनस, ओके. तो माइनस 1 by x है तो उल्टा हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका माइनस 1 by x इज दिस, हाँ दिस इज माइनस 1 by x, दिस इज माइनस 1 by x. इंसर्ट ऑन पेज. ठीक है, ये इसको यहाँ पे रख देते हैं. ठीक है, अब जो है दूसरा मैं फंक्शन एनालाइज करना चाहता हूँ, y इज इक्वल टू 1 by x स्क्वायर. तो इसको मैं अगर एनालाइज करूँगा तो ये हो जाएगा आपका ये है 1 by x स्क्वायर का ग्राफ. ठीक है, ये है 1 by x स्क्वायर का ग्राफ. इसको भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ. ठीक है, दिख रहा है ना, ये है 1 by x स्क्वायर का ग्राफ आपका. ठीक है, अब अगर मैं दोनों का सम करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू माइनस 1 by x प्लस 1 by x स्क्वायर. ठीक है, ये अगर करना चाहता हूँ तो ये क्या होगा? ये होगा मेरा, ये हो जाएगा, तो स्क्वायर कहाँ आ गया?
टाइम्स आ गया ना, सॉरी। हाँ ये ये है आपका सम, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस, कैन यू सी दिस? तो ये हो गया आपका सम, इसको मैं जगह पे ला के लेके आता, ये आपका 1/x² और ये आपका ये, सो दोनों को ऐड करके मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, एक सेकेंड। मैं जस्ट दिखाना चाहता था कि इसका ग्राफ का नेचर क्या होगा। ये हो गया आपका एक तो सॉरी, ये एक इक्वेशन, ये हो गया एक फॉर्म, दूसरा हो गया ये, और ये आपका हो गया दिस वन, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज y इज इक्वल टू -1/x and this is y is equal to 1/x², and this is y is equal to -1/x plus 1/x², ठीक है। तो हमारे पास तो यही है ना, ये जो टर्म है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन 1/r², और ये जो टर्म है ये -1/r है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है वो भी सिमिलर ही आएगा। सो इफ़ आई वांट टू ड्रॉ, आर यू फॉलोइंग ना? बेटा डिस्कशन फॉलो कर रहे हो? अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो कुछ बोल नहीं रहे। Yes, sir. ऑलराइट, Yes, sir. so let us look at the analysis of the potential energy, because आप लोगों को मालूम होगा कि मैकेनिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी को एनालाइज करके भी मोशन के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है बेसिकली। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर लुकिंग एट हाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज़ वेरिंग, ओके, कहाँ पे इसका मिनिमा है, मैक्सिमा है। तो इसको मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूँ, फिर ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूँ। यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ आपको, नहीं यार ड्रॉ कर देता हूँ। तो हो क्या रहा है कि आपका जो ये टर्म है, आपका एक टर्म तो हो गया ये, दूसरा टर्म तो आपका हो गया ये, तो आपका जो सम जो हुआ वो हो गया आपका ये, ठीक है। सो दिस इज दी L²/2 μr², this is L²/2 μr², and this is minus k/r, this is minus k/r, and this is the U effective. Can you see the graph? The blue one is the U effective. So this is the nature of the potential basically. This is the U effective with respect to R. दिख रहा है बेटा यहाँ पे? यस सर। तो अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ के बेसिस पे जो है हम जो नेचर ऑफ मोशन है उसके बारे में कुछ चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये बेसिकली आपका जो है एक तरीके से रेडियल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ही है, ठीक है, इट्स विथ रेस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस। तो यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर रेडियल डिस्टेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसके रेस्पेक्ट में जो है ये राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, ठीक है। नाउ विदाउट गोइंग टू मच इनटू कैलकुलेशंस, उतना आई थिंक एग्जाम में नहीं आएगा कि अलग अलग एनर्जीज़ के लिए आप प्लीज़ टेल अस व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर ट्रेजेडी, उतना नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि अलग अलग चीज़ों के लिए आपको किस तरह का जो है ट्रेजेक्ट्रीज पॉसिबल है। सो ये प्लीज़ नोट डाउन, दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज दिस गिव्स यू एन आइडिया अबाउट व्हाट इज़ दी इफेक्टिव पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस फॉर प्लानिटरी मोशन, बिकॉज हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए कर रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए कर रहे हैं। तो ये जो इफेक्टिव पोटेंशियल हो गया, इस इफेक्टिव पोटेंशियल में ये आपका इफेक्टिव पोटेंशियल है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो वन इज गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज गोइंग टू डिटरमाइन व्हाट इज द नेचर ऑफ द पोटेंशियल वेल। तो फिर मैं नीचे चलूँ यस सर।
ठीक है, नीचे मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ, ठीक है। लेट मी मेक दिस वंस अगेन। So the y-axis is u effective, the x-axis is the radial distance, right? And आपका जो ग्राफ है that is this kind of a graph. All right, आपका जो ग्राफ है that is this kind of a graph. Because this entire system is rotating, I can basically draw it in both sides. It's sort of symmetric with respect to this thing, okay, axis के respect में, okay. So this is basically the potential. All right, मैं अगर आप यहाँ पे trajectory को study करना चाहता हूँ, I want to study the trajectory that is involved here. Now, so there is no maximum to the potential, however there is a minimum to the potential, right? And the minimum to the potential is somewhere here. This is the minimum to the potential. This is the minimum potential energy that is possible. This is the minimum potential energy possible. Okay, so this is the U effective, okay, graph. Now अगर पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी तो है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो इस तरह का है, सो हियर दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स, दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज एंड दिस सिंपली रिप्रेजेंट्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, और ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है तो पार्टिकल का जो एनर्जी है वो किसी भी रीजन में लाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिकल का एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर पार्टिकल अप्रोच कर रहा है तो पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं। पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, पार्टिकल एनर्जी मिनिमम भी हो सकता है। बाय पार्टिकल आई मीन द सिस्टम, ओके, यहाँ पे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम का है एनर्जी है, टोटल एनर्जी। तो ये जो है टोटल एनर्जी, ये यू मिनिमम भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन दिस सिस्टम? Yes, sir. So there are 3 possibilities. देखो, this is the most important part of the lecture because here we will make the conclusions. So what is going to happen when you end up getting this kind of a situation? So अगर, so this is planetary motion. So this is U minimum. अगर सिस्टम जो है मिनिमम एनर्जी पे है, अगर सिस्टम मिनिमम एनर्जी पे है तो द नेचर ऑफ द ऑर्बिट इज एनीबडी कैन गेस? Can anybody guess what is going to be the nature of the trajectory? ये कैसा दिख रहा है? दिस लुक्स लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रैजेक्टरी? The circle. It's a circular trajectory. Okay, so the planet will be in a circular trajectory. So सबसे पहला है various scenarios possible. यहाँ पे जो है there is a various amount of calculations which are possible, but I am not doing that because it's not relevant. Okay,
दैट मीन्स कि अलग अलग एनर्जीज़ के लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को ऑब्टेन करो, फिर वहाँ से आप ट्रैजेक्टरी को ऑब्टेन करो, फिर ट्रैजेक्टरी का रिलेशनशिप से आप डिटरमाइन करो कि किस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप है. I'm not going into all of that. It's not necessary. What I'm going to do is I'm just going to give you the conclusions for various energies possible. Various scenarios CNARIOUS with respect to energy. That number one, your energy is equal to the U minimum. Okay. Now U less than minimum not possible. Sorry, E less than U minimum नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल. ओके, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉसिबल जो है यू मिनिमम, दैट मीन्स द एनर्जी इज हियर. लेट्स सपोज ये E1 है. ओके, सो E1 इज इक्वल टू यू मिनिमम. सो इफ E1 इज इक्वल टू यू मिनिमम, सो हियर द नेचर ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज अ सर्कल. Okay, nature of the trajectory circle. Second case scenario, if the particle's energy is negative, but it is not minimum. Let's suppose the particle is here. कोई बता सकता है इस केस में क्या होगा? Anybody can say what will be the trajectory here? Ellipse. Yeah, very good. So the particle has negative energy, but it is not U minimum. In that case, it will be an ellipse. Case you will get an ellipse. Second case scenario is that this is E2. So E2 is greater than U minimum but less than 0, then nature of trajectory is an ellipse. Okay, it is an ellipse. पहले के लिए it was a circle. Third case scenario कौन सा होगा? Third case scenario होगा आपका third case scenario होगा when energy is 0. ज़ीरो एनर्जी पे क्या होता है ट्रैजेक्टरी? ज़ीरो एनर्जी पैराबोला. वेरी गुड. ज़ीरो एनर्जी पे पार्टिकल जो है यहाँ से आएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा. ठीक है, लाइक सम काइंड ऑफ अ कॉमेट. ऐसे आएगा और निकल जाएगा. सो ज़ीरो पैराबोला यहाँ पे आपका होता है पैराबोला. Okay, so third case scenario, you will get that E3 is equal to 0. This is E3. You will end up getting a nature of trajectories parabola. And the fourth case scenario where energy is greater than 0. Let's suppose purple. Okay, energy यहाँ पे है तुम्हारा. Let's suppose
पार्टिकल यहाँ से आ रहा है इस तरफ से, ओके। Can anybody tell me what will be the nature of the trajectory for e greater than 0? So the fourth hyperbola. hyperbola, very good. Okay. So fourth situation, your e4 is greater than 0. So this is e4, this is e4 is greater than 0. In that kind of a situation, nature of trajectory is a hyperbola. ओके, हाइपरबोला मीन्स इट्स बेसिकली अनबाउंड मोशन. सो आपका हाइपरबोला भी इसी तरह का होगा, समथिंग लाइक दिस. पता नहीं. Okay, so you end up getting a hyperbola here. You end up getting a parabola here. You end up getting an ellipse here. You end up getting a circle here. Okay, so as you can see that when E is less than 0, you end up getting bound motion. So this is bound and this is bound. Okay, ellipse and circle, जहाँ पे energy is less than 0, these are both bound systems. Okay, however, where energy is greater than equal to 0, greater than 0, these are unbound systems. Okay, अनबाउंडेड मतलब दूर से कोई सिस्टम आता है, कॉमेट आता है और अर्थ के अराउंड स्विंग करके चला जाता है. कोई दूर से कॉमेट आएगा, अर्थ के अराउंड से स्विंग करके निकल जाएगा. गो विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी एंड गो टू इन्फिनिटी. Are you understanding? So when energy is greater than 0, particle comes from infinity, goes back to infinity, does not come back. It's not a closed orbit. लेकिन जब अंदर होता है तो यहाँ पे जो है ये क्लोज ऑर्बिट होता है. लेट्स सपोज यहाँ पे अगर कोई एलिप्स है तो इट इज़ अ क्लोज्ड ऑर्बिट विद इन दिस सिस्टम. दिस इज क्लियर, दिस एनालिसिस इज क्लियर. यस सर. इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है इस डिस्कशन में?